So hello guys, welcome back to this video, and in this video we are going to solve the next problem of our ongoing series uh, FRAZ DSA sheet, and we are solving linear DP section. So we have successfully solved the lot of problems from this section. Today we are going to solve the next problem, which is arithmetic slices. So let's open it and try to read the statement. So the problem statement is an integer array is called arithmetic if it consists of at least three elements and if the difference between any two consecutive elements is the same. Okay, so basically it is asking about if I have to find out the number of subarrays which are uh, at least of length 3 and they are forming arithmetic sequence. Okay, so let's try to understand it on a whiteboard. Let me share it. So so let's say, first of all, let's say we have some number. Before starting the actual problem, I want to ask you something. So let's say we have some array. Okay, so we have some array, so we know that this complete array is the difference between every consecutive element is 1. It's a 1 ka difference. Okay, and I am asking you to find out the number of subarrays of at least length 3 which are forming sequence. So everything is forming every subarray is of difference, means there the difference between each consecutive elements is one only. So if you try to just find out the try to see observe the problem, this particular problem that I am asking. So we have one subarray this, one subarray this, one subarray this, one subarray this. So if I say from ending with 3 we have one subarray, with ending with 4 we have one subarray, and 5 1 and 6 1. So सबसे end होके हमारे पास 1 सब arrays हैं which are of length 3. But if you see, so just if you try to ignore this, but when you come here ending with 4, so if you try to find out ending with 4, so one sub array is 2 3 4. But also this 2 3 4 can also be pair up with this one, because these all are consecutive and the difference between them are just 1. So they are forming sequence. Similarly, if you try to find out with ending with 5, so the first subarray will be 3 4 5 definitely. But 5 4 3, so this can be also added. You can include it into the subarray to form this. Similarly, this can be also added. So 1 2 3 4 5. So if you see, ending with 5 we have 3 subarrays. So for ending with 4 we have 2 subarrays. Ending with 3 we have 1 subarrays. Ending with 3, so it will be 1 2 3 only. So ending with 1, ending with 2, ending with, so ending with 4, ending with 5. If you try to find out 6, first one is 4 5 6, then 3 4 5 6, then 2 3 4 5 6, and then 1 2 3 4 5 6. So these are four subarray. So this is just an observation that if you try to find out the sequences in consecutive, so it will always be in sum of. So let's say the length of the consecutive sequence is 6, then it will be forming like 1 plus 2 plus 3 plus 4, like this. 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 10 10. Similarly, for if you take one more example, 1 2 3 4, here also 1 2 3 2 3 4 and 1 2 3 4. So it's 1 and 2, that will be 3. Okay, got it. So it will go 1 plus 2. So
So the given problem is same. So if there is some sequence x1, x2, x3, x4, x5, x6. So if these are the difference are consecutive. Just if its length is 3, so 1. So 1 plus, so summation I equal to 1 to the length minus 2. You have to do this for every subarrays. So you have to just do the same thing. But actually we are following DP series. So this is the actual solution of the given problem. You can solve that problem by this. But we are not going to do this. We will just solve using our DP approach. So the first thing we will define DP. Define your DP. So DP of I will be if we are taking as nums of I as last element, then number of subarrays of length at least 3. Okay, so this is our DP state. Now our second step is solve for smaller values. So let's say this is our array 1, 2, 3, 4, 5, 8, and it's a 11, 12, 13. So this is our array. So DP of 1, एक को अगर इंक्लूड करोगे 0 आएगा, जस्ट यहाँ एक है. DP ऑफ 2, नम्स ऑफ इसको इंक्लूड करोगे, नम्स ऑफ 0 1, इट्स इंडेक्स को ऐसे रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. DP ऑफ 2 मीन्स तुम इसको इंक्लूड करोगे सो 0 आएगा. DP ऑफ 3 1 आएगा. तुम चेक करोगे कि ये और ये इन तीनों का डिफरेंस अगर सेम है, मीन्स ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस इक्वल है. सो देखोगे 1 minus 2 1, 3 minus 2 इट्स 1 and 1 इट्स इक्वल. सो DP ऑफ 3 विल बी 1. नम्स ऑफ 3 को हम लास्ट एलिमेंट मान रहे हैं. फिर DP ऑफ 4, हम नम्स ऑफ 4 को लास्ट एलिमेंट मान रहे हैं. नम्स ऑफ 4 को लास्ट एलिमेंट मान रहे हैं तो बस हम ये चेक करेंगे, हम इस चीज को हमने ऊपर समझा तो हम इसको पेयर अप करेंगे कि वेदर दिस एंड दिस मीन्स 2, ये और ये इक्वल है कि नहीं. इफ ये यार ये दोनों आपस में इक्वल है मीन्स एक तो ये खुद का बना दिया, बट साथ ही साथ क्योंकि ये अपने पीछे वाले के साथ पेयर अप कर रहा है, मीन्स वो सीक्वेंस जितना बड़ा था उसको वो सीक्वेंस में अभी अगर कोई आंसर था तो उसके साथ भी पेयर अप कर लेगा. अगर उसके साथ पेयर अप कर लेगा तो हम DP ऑफ इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा. जैसे देखो कैसे हो रहा है. इसलिए 1 2 3 4. सो हमने बोला कि इससे हमारा आंसर मिल गया, एक आंसर है. ठीक है. मैंने क्या बोला कि आई एम नाउ आवर इट्स इंडेक्स 0 1 2. नाउ माय लास्ट एलिमेंट इज 4. सो इफ माय लास्ट एलिमेंट इज 4, सो आई हैव वन सब एरे. बट इसके साथ साथ ये सब एरे, ये जो 4 है वो उन सबके साथ जुड़ सकता है जिसका आंसर इसमें स्टोर है. सो लेट्स से DP ऑफ 3 में मैंने बोला कि एक एक बन पा रहा है तो ये 4 इस वाले आंसर के साथ भी ऐड होके इसका जो भी आंसर, ये जो भी सीक्वेंस था लाइक 1 2 3 था, इसके साथ ये 4 ऐड होके एक और सीक्वेंस बना लेगा. तो इसलिए DP ऑफ 4 में हम क्या करेंगे 1 प्लस DP ऑफ 3 कर देंगे. तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया. जैसे DP ऑफ 5 देखना. DP ऑफ 5 में हमारे पास है 1 2 3 4 5. मैंने 5 को लेके पेयर अप किया. मैंने बोला कि इनका डिफरेंस सेम है. सो 5 का इसके साथ 3 लेंथ का एक तो बना, बट साथ ही साथ ये 5 यहाँ तक के जो भी आंसर्स थे, जितने भी सब एरेस थे, उसमें ये ऐड होके
एक और एलिमेंट बना लेगा, तो डीपी ऑफ 4 का जो आंसर होगा। ठीक है। सिमिलरली डीपी ऑफ 6 में, जब डीपी ऑफ 6 में जाओगे, 1 2 3 4 5 6 5 8। अब देखो इसका और इसका 4 and 5 and 5 and 8 difference is not same, then this 8 cannot be even part of this part of length 3 sub array, or even it cannot be added with the answer that are number of sub array till this index. So अगर ऐड भी करेंगे तो किसी के साथ भी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बना पाएगा, तो इसलिए डीपी ऑफ 6 सीधे 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन दिस वे वी विल कैलकुलेट अवर डीपी, और हम फाइनल सबके जैसे लेट से डीपी में हमारा आंसर कुछ ऐसा आया, x1 x2 0 x3 x4, हम सारे आंसर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द कोड। सो हम एक क्या बनाएंगे, एक डीपी बनाएंगे। सो वेक्टर इंट डीपी नम्स डॉट साइज 0। डीपीआई क्या बोलता है, नंबर ऑफ सब एरेस ऑफ लेंथ at least 3 where last element is nums of I. So for int I equals to 2 से हम स्टार्ट करेंगे, I लेस देन nums डॉट साइज पे जाएंगे और I प्लस प्लस करेंगे। फिर we will just check if nums of I minus nums of I minus 1 equals to nums of I minus 1 minus nums of I minus 2. Then we will just dp of I will be 1 plus dp of I minus 1. Now at the end we have to just add the answer, so we will just add the answer here only, answer plus equals to dp of I, and we will finally return the answer. Let's try to run it. Good. Where it is given, oh, it's not minus 1, it's 2. Let me try to run it. Okay, yeah, accepted. Let's try to submit it. Yeah, accepted. So this is the solution for this video. Thank you so much, and see you in the next video. If you like the solution, then hit like, and if you have any doubt, write it into the comment box. And till then, keep learning, keep coding. Bye bye. See you in the next video.